رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing well. स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बातों से। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, And your Lord says, call upon me, I will respond to you. इसी से रिलेटेड एक हदीस जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दुआ मांगी जाए इस यकीन के साथ मांगी जाए कि हमारी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। दुआ तीन तरह से हमें उसका जो आंसर है वो मिलता है, या तो वो फ़ौरन से कबूल कर ली जाती है अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है, अगर वो उस वक्त हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती तो उसको आने वाले वक्त के लिए महफूज रख लिया जाता है, या थर्ड कंडीशन ये है कि उस दुआ को हमारे लिए आखिरत में उस दुआ का अजर जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी दुआ जो है वो रद्द नहीं करते। सो हमेशा जब भी दुआ की जाए इस यकीन के साथ की जाए कि हमारी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। आज के लिए एक बहुत ही प्यारी दुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। बहुत ही मुख्तसर सी दुआ और बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसे हमें अपने डेली लाइफ में जो है वो शामिल करना चाहिए। Dear students, now let's start the lecture number 2 of Unit 1, Measurement. In the today's lecture, we will learn about the scientific notation. Scientific notation is basically a way of writing the large or the small numbers. We will learn about writing the unit symbols and their names. And at the end, we will learn about the errors in the reading or in the measuring instruments. Now there is a question, why is it important to have a standard system of units that is used by all scientists and engineers? We have discussed this topic yesterday in our lecture number 1. So if any one of you want to answer, you can unmute yourself and you can give answer. We need a system of units so that we can specify our answer, what we want exactly. In case if we don't have a specific terms or units, then we will not we will have a mixed answers and we will not be able to give a proper instruction. Good, well done. The excellent answer. Actually, in 1999, the NASA has lost $125 million because of the Mars orbiter, because half of the project staff used imperial measurements. Imperial measurements was the English units, which includes the foot, the pound, etc., while the other half used the metric system, which is basically the SI unit of system. So due to the incorrect calculations by the both teams, there occurred an error in the transfer of the information between the two teams working on the same project, due to which the orbiter disappeared while approaching the Mars.
So the standard units are very important while transferring information from one team to another team, or from one part of the word to the other part of the word, so that there will not be any chance of error. Topic 1.3 is about the scientific notation, and the scientific notation is a way of writing a very large or a very small number in terms of the decimal form. For example, the scientific notation actually written as a number which is between 1 and 9. This number could be equal to 1 or greater, and it must have to be less than 10, which means the number has to be between 1 till 9, or it could be 9.987 and so on, but it has to be less than 10. While the number has to be multiplied with the power of 10, and this power must be an integer, 1, 2, 3, either minus integers numbers or the positive numbers. So in scientific notation, a big or a small number is written as the product of a number that is greater than 1 and less than 10, which is also known as the mantissa, or we can also say that the coefficient, which is multiplied by the power of 10, or the exponent of the 10. So for example, if someone writes that the human body contains approximately this much number of atoms, but this large amount of number is not only time consuming, and also it is difficult to write because there is a chance of error, because someone can miss the number of zeros while writing this much huge amount of the atoms. So it is better to write the number in terms of the scientific notation. So in terms of the scientific notation, this number can be written as 7 cross 10 to the power 27. Now, how we have written this number? It is quite easy. First of all, the coefficient or the mantissa, which must be a non-zero digit number, which has to be between 1 and 10, less than 10 basically. So 7 is the non-zero digit number, which is considered as the mantissa, while there are 27 zeros. We have moved our decimal point from the end term until this point, which is just after the 7. So there are 27 zeros. We have moved our decimal point 27 times towards the left. So the power increases positively and the number becomes 7 cross 10 to the power 27. Now in this scientific notation, the rules of writing the number, how we can write the number, if the exponent, or the, sorry, not the exponent, but the decimal point, if the decimal point moves towards the left side of the number, then the exponent will increase. It will go up positively. And if the decimal point moves towards the right side, then the exponent goes down, or the exponent increases negatively with the negative sign. Dear students, साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे जो इसमें सिंपलेस्ट पॉइंट है हमारे पास, वो यही होता है कि अगर हमें डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है, तो इट मीन्स कि एक लार्ज नंबर है, एक बिग नंबर है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो बिग नंबर्स के केस में डेसिमल पॉइंट जब टुवर्ड्स लेफ्ट मूव होता है तो इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में इंक्रीज करती है.
लेकिन अगर हमारे पास नंबर स्मॉल हो तो उस केस में डेसिमल पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, और इस केस में जितने पॉइंट्स हमने डेसिमल को मूव किया होगा उतनी ही 10 की पावर जो है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। या आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो, अगर हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर जो है वो इंक्रीज करती जाएगी बाय 1, जितने पॉइंट्स हम इसको टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे उतनी ही पावर जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। और स्मॉल नंबर के केस में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो जितना टुवर्ड्स राइट हम उसको मूव करेंगे, जितने पॉइंट्स हम उसको टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे, उतनी ही हमारे पास जो 10 की पावर है उसमें से हम -1 करते जाएंगे। सो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे है ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन एन appropriate way. Let's see now one more example. So we have to write down this number in the scientific notation. So first of all, इसमें हमारे पास coefficient होगा और 10 की पावर होगी, 10 की एक्सपोनेंट हमें लिखना है। So इस केस में हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है, और जितना हम डेसिमल पॉइंट को जंप करवाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट उतनी ही हमारे पास 10 की जो पावर है, 10 का जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज करेगा। और बाकी जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको हम एज अ कोफिशिएंट जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 टाइम्स जो है इस डेसिमल पॉइंट को जंप करवाया, तो हमारा आंसर जो है वो 1.234 टाइम्स 10 to the power 6 होगा। इसी तरह से for a small number the decimal points move from the left to right. So now in this case the decimal points jump 1, 2, 3, 4 and 5 times. So our coefficient will become 3.4, while the value of the exponent will become -5. So each time when we jump towards the right side, we will subtract -1. Also, the scientific notation is an easy way to either add, subtract, multiply, or divide the large numbers. For example, if we want to multiply the two numbers which are in the scientific notation, so their mantisas are simply multiply with each other and their exponents are added. For example, if the population of the earth is approximately 7 billion, which equals to 7 cross 10 to the power 9, and the number of atoms in a body is approximately equals to 7 cross 10 to the power 27. And we want to find out how many atoms are contained in the body of all the people on the earth. So we have to multiply the population of the earth with the number of atoms in a body. So we multiply 7 cross 10 to the power 9 by 7 cross 10 to the power 27. So while multiplying the numbers which are in scientific notation, we multiply the mantisas with each other. And in this case, the mantissa of the first and the second term is both 7, while we add the exponents of the 10. So 10 to the power 9 plus 10 to the power 27. So 7 times 7 is 49, while 10 to the power 9 plus 27 will become 36. ये आप लोगों को मैथ्स का भी एक रूल याद होगा कि जब किसी भी नंबर की जो बेस होती है, जब बेसेस सेम होती हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती हैं। सो क्योंकि इन दोनों टर्म्स के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सेम बेसिस हैं दोनों की, तो इनकी पावर जो है वो ऐड होंगी, और बाकी जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब इस केस में 49 क्रॉस 10 टू द पावर 36 क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं गिवन ऑन, इसलिए अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे, सो वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट व्हिच इंक्रीजेस the exponent by 1, and our number will become
4.9 cross 10 to the power 20, sorry, not 27, 37. And it is just because it is a convention for the scientific notation to keep only one digit in front of the decimal point of the mantissa, and while adjusting the exponent accordingly. अगर हम towards the left move करेंगे तो जो exponent है उसमें +1 होगा, और अगर हम towards right move करेंगे तो exponent में से हम -1 कर लेंगे. So that's all from the scientific notation. Now the next part is about the prefixes to the power of 10. So the prefixes is basically a way of representing the powers of 10 in terms of the alphabet. There are particular powers of the 10 which we have given the alphabets just to simplify the numerical value. So the mechanism through which a term in the scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10 is known as the prefix to the power of 10. And a useful set of prefixes in SI unit replace given powers of 10, and prefixes make standard form to be written even more easily. And here is the table of the prefixes along with their name, symbol, and the multiplying factor, which starts from 10 to the power 24 and ends on 10 to the power -27. It contains the powers of 10, not all the powers of 10, but some powers of 10, just like 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, then there is no 10 to the power 4 or 10 to the power 5, and after 10 to the power 3, there is 10 to the power 6, and similarly for the negative terms. So the multiples or the sub-multiples named the alphabets which known as the prefixes. So now we will see how to write a number in the prefix form. So for example, the length of a housefly is 5 cross 10 to the power -3 meter. So for the 10 to the power -3, if we look at this table, the prefix is named as milli. So this number 5 cross 10 to the power -3 meter will become 5 millimeter, which can also be written as mm. First M is for milli, second M is for the meter. So dear students, एक बार फिर से मैं इस पार्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रीफिक्स फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन को या किसी भी नंबर को किस तरह से लिखा जा सकता है, इसमें हमारे पास जो 10 की पावर्स हैं, स्पेसिफिक 10 की पावर्स को हमने अल्फ़ाबेट्स जो है अलॉट किए हैं जिनके पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, और हम 10 की पावर की जगह उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसको हम मज़ीद जो है वो इजी वे में जो है वो लिख सकें, एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिख सकें. Now there are some other units to measure the length, and these units are the non-SI unit. These are not the SI unit because we know that the SI unit to measure length is the meter, but there are also some other units which are used to measure the length. One of them is the light year. Light year is actually the distance that a light travels in a vacuum in 1 year. एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, वो डिस्टेंस बेसिकली जो है वो कंसिडर किया जाता है एज द लाइट ईयर, और उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, एंड दैट डिस्टेंस
equals to 9.4607 cross 10 to the power 15 meters. So, for example, the nearest galaxy is the Great Spiral Galaxy, which is Andromeda, and its distance from the Earth or from our galaxy is 2.5 million light years away. Second unit is angstrom. The angstrom is actually the unit which equals to 1 cross 10 to the power minus 10 meter. And the examples could be the size of the helium atom is actually equal to 1 angstrom, which means it equals to 10 to the power minus 10 meter. It's a very small unit. And the third unit which we can use to measure the length is the micron, which is actually the micrometer, which means micro 10 to the power minus 6 meter. Its value equals to 1 cross 10 to the power minus 6 meter. For example, the diameter of the red blood cells are approximately equals to 10 microns, which means it approximately equals to 10 cross 10 to the power minus 6 meters in diameter. So these are some of the other units which we can measure length in terms of these units. Now we will see the rules which we have to follow while writing the unit symbols and their names. So first of all, we will see what are the rules which we have to follow while writing the unit symbols. First of all, unit symbols are printed in Roman upright type regardless of the type used in the surrounding text. अगर सराउंडिंग टेक्स्ट जो है वो इटालियन है, बोल्ड है, किसी भी टाइप में अगर टेक्स्ट लिखा गया है, यूनिट का जो सिंबल है वो हमेशा रोमन अपराइट टाइप में ही लिखा जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, M for मीटर, S for सेकेंड एंड PA for पास्कल. इनको हम इटैलिक या बोल्ड या किसी और टाइप ऑफ राइटिंग में हम यूनिट्स को नहीं लिख सकते. Second rule is a multiple or a sub-multiple prefix, if used, is a part of the unit and precedes the unit symbol without a separator. हमें prefix अगर किसी भी unit के साथ लिखना है तो हम space नहीं देंगे, हम बीच में कोई separation use नहीं करेंगे. Second thing, compound prefixes are never used. अगर फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर है तो नैनोमीटर को हम मिली माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते. नैनोमीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9. इस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 9 के इक्वल होती है. सो हम इस 10 की पावर माइनस 9 को 10 की पावर माइनस 6 विच इज मिली एंड 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज माइक्रो, हम इसको सेपरेट करके डबल प्रीफिक्स एक्चुअली हम यूज नहीं कर सकते. एंड सेम गोज फॉर द पिकोमीटर, 10 to the power minus 12, while micro is 10 to the power minus 6 and minus 6, so we cannot use the double prefix. हमें अगर डबल प्रीफिक्सेस हैं तो उनको पावर्स को ऐड करके उनसे एसोसिएटेड सिंगल प्रीफिक्स को ही यूज करना होता है. तो डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. तो सबसे पहला रूल क्या है, हमने यूनिट के सिंबल को रोमन में लिखना है. सेकेंड रूल जो है, मल्टीपल या सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस जो होते हैं उनको हम उस यूनिट के बिल्कुल साथ लिखेंगे, जैसे कि नैनोमीटर. नैनो इसमें प्रीफिक्स है, मीटर जो है वो यूनिट है. सो यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, कंपाउंड प्रीफिक्सेस को यूज नहीं किया जाएगा. थर्ड वन इज इन forming the products and the
quotients of the symbols, the normal rules of algebra is used. जो rules हम multiplication या division में algebra में use करते हैं, same वही rules apply होंगे while multiplying the unit symbols or by dividing the unit symbols. For example, अगर हम multiply करना चाहते हैं दो units को, for example Newton meter. So for the case of the Newton meter, अगर हमें दो units को एक साथ लिखना है, now in this case we have to give a space, ताकि हम इसको confuse ना करें कि ये prefix है या unit है. Prefix में कभी भी space नहीं आएगा, unit को हमेशा एक space के बाद लिखा जाता है, या आप dot को use कर सकते हैं. And same rule goes for the division. For the division of the units, either we use the slash for meter per second, or the power of the denominator term will become negative. Either we can write m/s, or we can also write as ms to the power -1 for the meter per second. मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट्स के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, और डिवीजन के लिए दो यूनिट्स के दरमियान या तो हम स्लैश यूज करते हैं या डिनोमिनेटर टर्म की पावर को हम नेगेटिव करके लिख सकते हैं. अगर इसकी पावर 1 है सो इट विल बिकम -1, अगर पावर 2 होगी सो इट विल बिकम -2 एंड it goes on. Next rule is, it is not permissible to use abbreviations for unit symbols or the unit names, such as we cannot write SCE for either the S or for the second. Same goes for the rest of the units. Just like for meter, we cannot write MET, or for the Pascal, we cannot write PAS. The symbol cannot be abbreviated. We must have to either write its complete name, or we have to use its unit, or its symbol. And when the multiple of the unit is raised to the power, then the power applies to the whole multiple, not just the unit. जब भी हम किसी unit की पावर को इंक्रीज करते हैं तो वो सिर्फ उस यूनिट की पावर इंक्रीज नहीं हो रही होती, बल्कि उसके साथ जो मल्टीपल होता है उसकी पावर को भी हमें इंक्रीज करना होता है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ द 2 millimeter square, we have to take the square of the 2 millimeter and also we have to square the unit. So milli is equal to 10 to the power -3. So the square of the 2 cross 10 to the power -3 will become 4 cross 10 to the power -6. 2 square is 4. 10 to the power -3 square will become 10 to the power -6. And the square of the meter. And while for the 10 to the power -6, the prefix is micro, so we can write down this term as 4 micrometer square. ऐसा नहीं होगा कि 2 millimeter square को हम 4 millimeter square लिखते हैं, वो हमारा आंसर गलत होगा. मिलीमीटर का भी स्क्वायर लिया जाएगा और मीटर के साथ तो स्क्वायर आएगा एज इट इज, क्योंकि हमने यूनिट का स्क्वायर यहाँ पे हम बेसिकली ले रहे हैं. So these are some of the rules which we have to follow for the unit symbol. Now we will see the rules which we have to follow for the unit names. For the unit names that are normally printed in the Roman, which is upright type, and they are treated like the ordinary noun. And the name of the unit start with the lower case, even when the symbol begins with the capital letter. लेकिन अगर यूनिट सेंटेंस की स्टार्ट में लिखा जा रहा है या ऐसी सिचुएशन है कि जो टाइटल है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जा रहा है, तो उसमें हम यूनिट के नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अदरवाइज जब भी यूनिट का नेम लिखा जाता है, इवन अगर वो साइंटिस्ट के नेम पे भी बनाया गया हो, तब भी हम उसको स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं.
सो यूनिट नेम कभी भी कंप्लीट कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता. Second, just like for example, the unit joule, its symbol is capital, लेकिन इसका जो यूनिट का नेम है ये स्मॉल जे से लिखा जाएगा, जबकि ये यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे है. हर्ट्ज, अगेन एच जेड, H is capital for the symbol but not for the name. Meter starts with a small m, ampere starts with a small a, even its symbol is capital A. Second rule is if for some reason the unit names is more appropriate than using the unit symbol, then in that case we can write down the unit name in the full form. Just like 2.1 m/s can also be written as 2.1 meters per second, just because यहाँ पे m जो है ये confuse किया जा सकता है कि either ये मिली है या मीटर है. So अगर ऐसे केस हो कि जहाँ पे यूनिट जो है वो confusing हो, वहाँ पे फिर हम यूनिट के सिंबल की बजाय उस यूनिट के कंप्लीट नेम को जो है वो यूज कर सकते हैं. And the third and the last rule is when the name of a unit is combined with the name of a multiple or sub-multiple prefix, then no space or hyphen is used. Same rule जो कि हमने symbol में भी देखा था कि जब भी prefix और यूनिट को लिखा जाता है तो स्पेस नहीं दी जाती. जैसे कि मिलीग्राम, मिलीमीटर, किलो पास्कल, इनको हम हाइफन या स्पेस के साथ नहीं लिखेंगे, इनको हमें कंबाइन करके ही लिखना है. So these are some of the rules which you have to follow while writing the unit symbols and the unit names. Now the last topic for today is errors. Error is actually the doubt that exists about the result of any measurement. And for every measurement, even if we are the most careful while taking the reading, there is always a margin of the doubt which is known as the error. And for example, if we want to measure the length of the crayon and the length of the pencil, so maybe some of you can read this length as 2.8 or 2.9 because it is not exactly at 3 and it is also not exactly at 2.75. So the reading will become doubtful. There are the chances of error in this reading. Same is the case while we are measuring the length of a pencil. This is not exactly at the 16 centimeter. It could be between 15.7, maybe some of you can write 15.8, 15.9. So there is a chance of error for every measurement. Now we will see how many types of errors are there. And actually there are the two types of error. The first one is the systematic error. The systematic errors are those errors that tends to be in one direction, either positive or negative. And some of the sources of the systematic error are, the first one is the instrumental error. And the instrumental error arises from the errors due to imperfect design or the calibration of the measuring instrument, or it could arise due to the zero error in the instrument. अगर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके डिजाइन में इम्परफेक्शंस होंगी, जस्ट लाइक अगर आप स्केल या रूलर को देखो, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डैमेज्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग में जो है वो वेरिएशंस आ जाएंगी. एंड द सेकंड टाइप of the systematic error, the source of the systematic error is the personal error, and it arises due to an individual bias, the lack of proper setting of the apparatus, or the individual's carelessness in taking the observation. अगर हम अपनी पसंद की रीडिंग लेना चाहें या हमें apparatus सेट नहीं करना आता या हम ऑब्जर्वेशन लेते हुए केयरलेस हैं, हम उसके पैरालेक्स का जो है वो ध्यान नहीं रख रहे कि हमें रीडिंग बिल्कुल उस स्केल के ऊपर से देखनी है, हम साइड से अगर देखेंगे तो ये पर्सनल एरर की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर्स जो है वो अकर कर सकते हैं. और सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स,
by selecting the better instruments and removing the bias as far as possible. अपनी पसंद की रीडिंग ना ली जाए, बल्कि जो एक्चुअल रीडिंग है उसको बेहतर कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए. The second type of the errors are due to the random errors, and the random errors occur due to the irregularity, and hence the random error are random with respect to the sign and the size. Random error जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती. अगर आप एक दफ़ा उस ऑपरेटर से रीडिंग ले रहे हो तो मे बी आपके पास आंसर आ रहा है 4 मीटर, सेकेंड टाइम अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3.5 आ रहा है, थर्ड टाइम करते हो तो 2.7 आ रहा है. सो ये बहुत ज़्यादा रैंडम वैल्यूज अगर आपके पास आ रही हों, सो उस केस में आप उस एरर को जो है वो रैंडम एरर का नेम दे सकते हो. एंड द रैंडम एरर अराइज ड्यू टू द रैंडम and unpredictable fluctuations in the experimental conditions like the temperature, the humidity, the pressure, and due to the personal error by the observer taking the reading. Just like temperature, humidity, pressure अगर fluctuate कर रहा है, तभी आपके कुछ experiments ऐसे होते हैं जो कि अगर इन terms पे depend करते हैं तो reading जो है वो fluctuate कर सकती है. And when the same person repeats the same observation, he may get the different readings every time. Now we will quickly summarize this topic. The error divides into two types, the systematic error and the random error. The causes for the systematic errors are the zero error or due to the incorrect calibration. And we can minimize the systematic error by improving the structure of the apparatus. And the random error occurs due to the parallax error and due to incorrectly using the apparatus. And we can minimize the random error by repeating the readings, by taking the more number of observations. The last thing is about the least count error. The least count is actually the smallest value that can be measured by the measuring instrument, and that is known as the least count. For example, for the vernier caliper, it has the least count of the 0.01 centimeter. For the spherometer, it may have the least count of the 0.001 centimeter. So किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतनी ही एक्यूरेट उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको अभी हम कल के लेक्चर में इन डिटेल इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. सिमिलरली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास दो रूलर हैं, एक का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और सेकेंड वन का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है. So obviously the ruler with the least count of 0.1 centimeter will be more accurate क्योंकि इसमें हम रीडिंग को 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं. Now dear students, the homework for you today are these two questions. Kindly note down the questions so that you can be able to complete. So this is the end of the lecture. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed the today's lecture. If you have any kind of question, you can write down your questions in the comment section. See you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.